But have you received the mark sheet? No, sir. You will clear this, It sir. yet not uploaded. But what do you think? Your interview marks for less or what? Sir, I do not think. I mean that I was not nervous at all. I was continuously smiling and replying whatever I knew and denying if I did not know. But I may have less marks in mains. I feel. It looks like that. Yes, sir. And when is your interview now? Civil service interview? 22nd Feb. 4 days after 4 days. 22nd. Oh, February. And what was your optional? Optional is mathematics. You've done well. Yes, sir. I have done very well. 22nd Feb. अब आप कहीं जाइए मत. Don't go to any other mock. Yes, sir. This is my last one. हाँ. तो वैसे 2 दिन लग गए. 24th को है. 22nd February. 22nd अब तो आज तो 18 हो गई. आज 20, 21 3 दिन बचे. मॉर्निंग में आफ्टरनून में. Sir, in morning. गुड. Then you are staying close by? What, sir? यहीं रहते हैं? You are Yes, sir. No, sir. In मतलब I live in Delhi only, but in Janakpur. Janakpur. वो इंटरव्यू में इंग्लिश में हिंदी में? English, sir. इंग्लिश में. Okay. Sorry, there was a communication gap. Nivedita. Mayur, you have watched on TV the terror attack on India by Pak-sponsored terrorist. So, what course of action is now should be taken? Supposing you are asked to advise the Prime Minister, he has already given a free hand to the army. What will be your advice? Sir, in short term right now, we should certainly take the strict action against the terrorists. But I feel that there is a violence against the Kashmiri in rest of the India. So that must be prevented by the PM's address very soon. And in long term, I think the Jammu Kashmir people should be included in the mainstream by providing the employment opportunities and all. So this is the ultimate solution, I feel. So you don't support the idea of launching further surgical strikes? No, so that is the course of action we can take right now. But I'm saying that in long term we should go for including them into the mainstream. That is the ultimate solution, sir. That of course we have been doing for We the have to past go for 70 years. We have been doing that only, Yes, sir. but we are not succeeding also. Yes, sir. Have you heard of the developments in the International Court of Justice, where the case of Kulbhushan Yadav is being taken up? Yes, sir. Today India is submitting some replies. Have you heard about that? So present affair, I'm not aware about the present. It is still underway. It is under TV. So, what is International Court of Justice? So, International Court of Justice is one of the organ of the United Nations, which deals with which resolves the disputes between the member nations. Okay. Over the different issues like territory dispute like Kulbhushan Yadav's Vienna Convention dispute. Is it like Supreme Court of the world? Can we say that? So every country has their own sovereignty, but if we see that internationally, yes, it is like a Supreme Court. Are its recommendations binding? Yes, sir. Its recommendations Binding are on both the parties? Yes, sir. Both the parties who accept that since they are United Nations members, and when they become member of ICJ, they accept that we will be binding. That is why, sir. And
civil engineering. Yeah? You are a civil engineer and you opted for what was the subject? Mathematics optional, sir. Mathematics. Mathematics. Last time I asked him some questions on mathematics. He was. Yes. But I don't think they'll ask you something in mathematics. Yes, sir. They generally do not ask for mathematics. Relating to mathematics, they don't ask. They don't ask. फॉरेस्ट्री का बारे में पूछ फॉरेस्ट्री का तो सब हो चुका ना. आपको चलिए सिविल सर्विसेज का यू सी you must concentrate on your state Rajasthan. There will be questions from your state. Since your math optional is ruled out, I don't think there will be many questions for mathematics. Then there will be general questions like what do you want to become an IAS officer? Why civil services? This is your first attempt. See, actually it is my second attempt. First mains attempt, sir. फर्स्ट मेन First की बात interview, करें sir. फर्स्ट You are here. But this is your पहले IFS. कभी हुआ होगा तो मेंस तक नहीं पहुंचे. हाँ No, but you are saying the first attempt. वो IFS का तो नहीं है फॉर्म तो IFS का ही है. ये I may लेकिन ये सिविल सर्विस का अभी फर्स्ट ईयर है ये. yes, sir. हाँ तो ठीक है. So civil services it's second attempt, sir. सेकेंड अटेम्प्ट Second. मिक्सअप कर दिए हैं. Actually, ये तो IFS का ही है. I have written right. IFS का नहीं, उन्होंने अलग से IAS का भेजा था टैपेक ना. ओके अच्छा, IFS was your first attempt. Yes, sir. IAS is I filled the Indian Forest Service in earlier attempt too, sir. So, both are the second attempt. both are second attempt. Yes, sir. I did not. Then also you reached interview level in IFS, Yes, sir. I reached only this in this attempt only. in forest service also. Yes, sir. And in the first you did not clear the film. Clear flames. Okay. Second attempt. This is your second attempt. Okay. So now, have you heard of Rights to Hearing Act? Rajasthan. Sorry, sir. I did not. Rajasthan was the first state, is the first state in India which has brought out this act in 2012. So it is about consumers. It is basically complaints, time-bound hearing and disposal of your complaint. Okay, sir. So it is, I would say, good public redressal, grievance redressal mechanism. Yes, sir. No other state has come out with such a act. There are mechanisms are there. Act means it is an entitlement. Yes, sir. There is a similar act in Madhya Pradesh to about around 62 services. They have made such act. Madhya Pradesh Public Service Act, which delivers the services in time bounded manner. In time bounded. Okay. Good. So Rajasthan, you are from Rajasthan. The Alwar is known for what? So mainly Alwar is famous for the Sariska Tiger Reserve. So. Other than this, there is a Alwar Fort and Alwar's culture, or Alwar's folk music, folk instrument, and Alwar is also known for the famous places like Sariska Palace, City You have been Palace. to Sariska Reserve, Forest Reserve, no? Sir, particularly I have not visited the Sariska Tiger Reserve, but when I used to visit towards the Bhangad, Pandupur like places, then it comes in between. Okay. Recently, government, once the new government took over, so they took two decisions. New government took two decisions. One was relating to farmers' loan waiver, and second was this withdrawal of the earlier government's order on education criteria. Did we discuss this question last time when you No, came? sir. So what do you say? Is farmer loan waiving is a good thing? No, sir. It is not a good thing at all. In the long term, it ultimately creates the moral hazard, and it is like a punishment to the honest repayers of the loans, honest farmers, and I think don't be judgmental. It is not a good thing. You can say, sir, this is. You should put it like this. As a short-term measure, the farmers are facing distress, serious distress. So maybe as a short-term measure, it may help them. that too we can do it in the targeted manner.
rather than don't say give- that I don't agree because our government has Okay. done it. So we cannot question the wisdom of people. You should put it in a positive way. But at the same time, then also suggest one or two more ways from your side. Some other ways of farmer, addressing farmer distress could be this. Okay, sir. Why? Fortunately, in Rajasthan, the incidents of farmer suicides are not there. What is the reason? Despite the fact that farmers are equally under distress, the crop failure is there, water stress is there. But fortunately, in Rajasthan, we hardly hear any case of farmer suicide. What is the reason? So there may be one reason that Rajasthan is also famous for the livestock rearing, which generates alternate employment for them. And say it emphatically. Don't say there may be another. This is the right reason. This is the right reason. That they have got a very strong animal husbandry base, dairy base, which is giving them They have an additional alternate employment, Yeah. Yes, sir. source of income. source of There. income. So that gives them insulation from real poverty. So that thing is not there in Maharashtra and some other states. That you don't say that maybe. It's really It's the a reason. strong reason. But sir, if I am not aware about the, if I'm not, I mean, if I'm not aware that it is the exact reason, then shouldn't It is- I? Then you say, but this is A major reason you can say. It is a a major major reason is this. I can feel that it is a Second major. reason Reason actually is that that one major reason. inequality in income is not as much there in Rajasthan Yes, sir. as it is in Maharashtra. Actually, in your case, I'm changing the format of interview. We have already been, you faced this board, and now I feel that you must clear your civil services. So I'm telling you the reply also, whatever I feel it should be good. So your concentration on your deaf should be top priority. Everything relating to your deaf. You should, of course, time is not much. But you should, whatever time is there for your interview, you should concentrate on your job. Otherwise, you are a pleasant personality. I'm sure you should do well. ये बाल अपने ठीक कर दीजिए। Okay, सर इसको ऊपर कर दें। फोरहेड के ऊपर यहाँ से आ रहे हैं ना, हाँ सर, वो कटवा दूंगा मैं, उसको हाँ, भी वो कटवा। ठीक करा लीजिए। वो तो सिविल सर्वेंट बनाने के के लिए हिसाब आपको से सारे नहीं बाल लगेगा। ही आपका हेयर कट तो होना चाहिए ना। हेयर कट तो होना चाहिए, ये इसी ठीक से नहीं तो- है। अगर ऐसे आप जाएंगे तो ठीक नहीं है। Proper parting, मतलब you should look like a civil servant. Okay, sir. Yeah, proper parting and then your this माथे पे जो बाल आए ये नहीं होना चाहिए, शेव वगैरह करके टाइमर लगा के अच्छे से Okay, sir. and smiling on your face and be confident. टाई कौन से लगाई थी लास्ट? So tie I have. Can I show you? लाइट ब्लू ऐसा कुछ कलर रखिए। Plain color रखिए. ये No, स्ट्राइप्स no, मत no, रखिएगा। plain. It should not have stripes. It should be plain. simple. लाइट ग्रे या लाइट ब्लू Okay, sir, कलर अगर buy- एक प्लेन टाई कोट लीजिए, पहना ना। शाइन ना कर रहा हो, कोट ये पहना है डल। हाँ सर। तो ग्रे कलर टाइप आपको लाइट ग्रे कलर की सूट करेगी. लाइट ग्रे कलर की ग्रे मतलब Plain सिल्वरी white. कलर होता है ना, सिल्वरी कलर, हाँ. सिल्वरी और डल डार्क सिल्वरी कलर. शाइन नहीं करे। और पतली टाई लीजिए, ज्यादा मोटी मत लीजिए, और ये जो बिल्कुल ऐसे सीधी आती है ना वही मत लीजिए. Okay, sir. नॉर्मल टाई जैसे ये भी, हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी इसे थोड़ी सी नॉर्मली जो आजकल आजकल थोड़ी सी पतली है। एक बिल्कुल पतली आ रही है वो मत लीजिए, बहुत पतली वाली मत वो लेना। मत लीजिए. Okay, sir. एंड अदरवाइज आपका राजस्थान पे क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछेंगे आपके इसमें आपको ऑप्शनल जो है मैथमेटिक्स पे ज़्यादा नहीं आएंगे, बट दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर Civil सिविल इंजीनियरिंग. Yes, sir. I prepared. सिविल इंजीनियरिंग का हाउ वुड यू मेक दिस ट्रांजिशन फ्रॉम सिविल इंजीनियर टू सिविल सर्वेंट. Do you think that you are eligible, you have requisite features, you have all the tenets of a good civil servant, confidence level, integrity, empathy, etc., etc. So can I tell on that issue? Suppose they ask the why do you have such talent of being a civil servant? Can I tell them that? So actually, I curbed corruption at Delhi Kent railway station parking. Sorry? I curbed corruption at Delhi Kent railway station parking once using the RTI and CP grams. In case they ask examples, like I could have asked this example, can you, once you say that I possess quality of honesty, integrity, I'm fighting corruption, etc. Then you, if the member asks, then you can cite an example. No, I mean sir that I can start like this, that I have been a participatory citizen and
and trying to do reforms, being outside the system, and now I want to be in the system to further work for the people. That actually that depends upon the context. If there is a context, then you can definitely. Yes, say. yes, sir. Because interview में ये बड़ा जरूरी है, don't try to show them off. Okay, sir. With that, I told sir, हाँ बिल्कुल. you have to create a context. Then you can, in a natural, it should come out as a natural. Yes, sir. In natural flow. Natural flow, and that you can create through your wisdom. You can create that whatever your strength areas are there. This is like this point you have said that you curbed the corruption. This is my main inspiration towards this service Don't only. say it to be the main inspiration. So, Inspiration to I mean, I have been fulfilling my fundamental duties as a citizen. So this That can inspires me. be like why do you want to join civil service? I suppose if I ask you this question, then you can say career diversity, diverse, opportunity, etc., etc. But you can say, sir, but triggered my this thing is this incident, and why I found myself successful in handling this case of corruption. Then I thought that if I, without being on any post, I can do this. So if I join civil services, I can really fight the menace of corruption Yes, sir. with the might of the government with me. Okay. Okay, sir. Please. ये अच्छा है थोड़ा current affairs be ready with that. Pulwama is the latest questions are being asked on that. ऊपर जो भी हुआ ना 22 को है ना इंटरव्यू टाइम ज़्यादा नहीं So I'm worried about current affairs only mainly because I have not prepared much current affairs. I have the general idea of current affairs. मेन जो है ना जैसे पुलवामा हाँ, का हो गया ट्रिपल तलाक है Okay. सिटीजनशिप Amendment. वो वाला हो गया फिर मॉनेटरी पॉलिसी अभी आया है थोड़ा सा उसका देख लो Current affairs में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं adultery पे 377, Yes, sir. प्राइवेसी, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस है अभी Yes, sir. उसका है। फिर आपका ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू हुआ, ईरान जो है वो, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ ईरान नाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. So Iran has become very important for because Iran has also recently been attacked by Sunni terrorists, and Iran is blaming Pakistan for it. And even in fact they have given warning that either you take action or we will take it. Yes, sir. So yeah, these are all current affairs. Don't feel nervous that you don't know, you are not prepared. These are all natural things which are happening in the last routine things which have been happening, and you should be, just general awareness should be there Yes, sir. about your what else. तो राजस्थान के बारे में जरूर पढ़ लीजिए आप पूरा हिस्ट्री में कुछ पूछ सकते हैं. हिस्ट्री के, टूरिज्म के बारे में, और वहाँ के सोशो इकोनॉमिक इंडेक्सेस क्या क्या है Yes, sir. I have read that. ना, वो आपको मालूम है. So about history, sir, am I expected to learn all the kings? No. What is the famous Maharana Pratap type? हमें फॉर एग्जाम्पल जयपुर किंगडम है राजस्थान. सवाई जय सिंह, बप्पा रावल. स्पॉट्स आते हैं आपके कि जो कौन से स्पॉट्स हैं मेजर राजस्थान हाँ, वो so I have prepared that. यू नो कि वो किसने कौन एसोसिएटेड है उनसे जो Yes, sir. Social problems is women empowerment पे, women education is very low there. Malnutrition is a serious problem. Yes, sir. और तो ये सब बाल विवाह Yes, sir. एक बड़ी प्रॉब्लम है Unmale- child marriage. Unmale vivah bhi hai, sir. Huh? Unmale vivah. I mean, the boys of the boy has the more age than a girl. Such type of marriages are prevalent there. Old person, 35-40 years age, men marry the. but the girls are minor. Yes, sir. If they are minor, then only there is a problem. You Yes, say sir. the child marriage. Child marriage, it is Don't covered define in this. child marriage. This is you leave this. Don't It mind. is covered in child marriage. Child marriage. You say If child. the girl is an adult, then it is a legal marriage. Nobody can say anything. जो अलवर में इंसिडेंट हुई थी मॉब लिंचिंग के लिए, उसके बारे में लोग पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज हैपनिंग टू द स्ट्रे कैटल और स्ट्रे काउ, हाउ आर दे बीइंग मैनेज्ड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. So about cow. स्लॉटर तो अब नहीं होता ना, What, sir?
काउ स्लॉटर तो नहीं कर सकते? Yes sir, अभी तो नहीं कर सकते. नहीं कर In सकते fact, ना, it is पहले भी banned. बंद कर दिया था, अभी भी बंद ही है ना, Now it is a ban. बैंड हो गया आपका। तो अब वो जो अनप्रोटेक्टिव काउज हैं और उनका अब कैसे मैनेजमेंट हो रहा है? अनप्रोटेक्टिव है ना, किसान जो है बहुत परेशान है कि कैसे इनको बाहर रखा जाए, इट्स ए प्रॉब्लम फॉर देम। Yes sir. तो वो आप उसके बारे में बताइए, कैसे कर रहे हैं, क्या वो गौशाला खोल रहे हैं, क्या कोई काउ शेल्टर खोले जा रहे हैं, क्या? काउ शेल्टर का बोलिए, आपकी गवर्नमेंट कर रही है। कर रही अभी है. को अभी नए बजट में स्कीम भी शुरू हुई है। I will do it sir. जब देख लीजिए बजट में स्कीम शुरू की है, Okay sir. 700-750 करोड़ रुपया रखा है। हमने वो यूपी में है, राजस्थान का भी देखिए। नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया ना। सेंटर में भी नहीं, यूपी ने भी अलग से किया है। UP has done that. राजस्थान में भी कुछ है मेरे ख्याल से। UP had Rajasthan had earlier the Gay Mantralaya. Cow. अब नहीं है। I do not know. I will see. कुछ मंत्रालय बने ही नहीं ना वहाँ तो भी, हाँ, नई गवर्नमेंट आने के बाद में। बट ठीक है। वी आर वेरी कीन दैट यू शुड मेक इट टू सिविल सर्विसेज। So I do not understand what आपको what the पूछना है, बताइए. what the board actually want. क्या मतलब? देखिए, आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो नहीं जानते उसको। एक तो पहली चीज़ मैं बताऊंगा, आपका जो लोड है आपके दिमाग में कि मैं IFS क्लियर नहीं कर पाया, उसको हटा लीजिए, फॉरगेट द पास्ट। Sir, I do not have no. हाँ, तो उसका अपने माइंड पर मत रखिए। और अगर आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, डोंट गेट वरीड, देयर इज नो नीड टू गेट स्ट्रेस्ड ऑन दैट काउंट। दूसरा भी पूछा, वो भी नहीं आया, कोई बात नहीं, जस्ट से आई एम सॉरी सर, आई कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना किस तरह प्रेजेंटेशन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं आंसर, वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। Okay sir. आप अपने आप को मानिए ना कि जैसे आप बोर्ड मेंबर हैं और मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए आया हूँ। एज ए बोर्ड मेंबर यूपीएससी क्या मुझ में देखेगी? आफ्टर सिविल सर्विसेज में जाऊँगा मैं, सिविल सर्विसेज में इतनी बड़ी ह्यूज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1-2 साल में, जिसमें एज में आदमी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, उस एज में यू विल बी कंट्रोलिंग, आई मीन यू विल बी बेसिकली हैंडलिंग population of maybe 5 lakh, 10 lakh people in subdivision after that. So what would you like to see in me? What are the traits of a mature, a very confident person, Yes sir. having good analytical power? Yes sir. That is what interview board is going to judge. They will ask you questions like, I think you will be asking some question. You will put very tricky questions just to see whether you can get the real crux of the question or not. Okay sir. The board may try to, 1 or 2 questions they may ask you to irritate you. Like you are not saying, you don't know even this, like they may say that. Just to, that they are testing your emotional intelligence. Okay. Whether under stress you can really work or not. Can you think properly or not under a stress condition? Stress condition 25 मिनट में क्या क्रिएट कर सकते हैं? इतनी हैवी आपको थोड़ा इरिटेट कर दिया, आपको थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन में डाल दिया, आपको थोड़ा नर्वस कर दिया, तो उस टाइम पे आपको नहीं होना है। बस यही आपको वो बेसिकली बोर्ड वाले देखेंगे आपको। बाकी तो आपने देखिए क्लियर कर लिया आपने, तो आपकी कोग्निटिव इंटेलिजेंस तो बाई एंड लार्ज उन्होंने चेक कर ली। कोग्निटिव इंटेलिजेंस का मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, किताबों की नॉलेज, वो सब हो गई, वो तो पता चल गया आपने, जब भी तो आप इसमें आए हैं मेंस के अंदर, है ना। तो अब वो ज़्यादा आपका टेस्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये बाकी जो आपकी इंटेग्रिटी वगैरह है, वो इंटेग्रिटी का भी मैंने आपको बताया कि तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिप्लाई में, कि आपने एक कुछ चीज़ बोली है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ बोला, आपने स्टैंड लिया, और 2-4 क्वेश्चन के बाद वो ऐसा कुछ आपसे पूछेंगे जिससे आपने कहीं उल्टा बोल दिया, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका मतलब इंटेग्रिटी इज नॉट देयर, मतलब व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट यू आर शेकिंग। तो ये सब चीज़ें मतलब आपका वो बेसिकली टेस्ट करेंगे। और आधा घंटा होता है तो आधे घंटे में और तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर से आपको, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि आप 5 क्वेश्चन भी अगर बोल देंगे ना, अभी मुझे नहीं आता है, नो इशू। So if I am not aware about something, for example, suppose they ask something about Delhi, and if I am not aware about that, से वेरी कॉन्फिडेंटली से सर सोरिया, so it does not create the negative impact. नो सर्टेनली नॉट। भाई 50 चीज़ हमको भी नहीं आती हैं। Okay sir. देखो आधे घंटे में ना अनलिमिटेड क्वेश्चंस को कैन बी आस्क्ड, अनलिमिटेड लैक्स करोड़ इवन में कर कुछ भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे, कुछ भी। तो यू आर नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग, बट व्हाटएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर दे वुड एक्सपेक्ट यू टू,
which you can't. Say for example, something about national flag color. मान लीजिए वो पूछ लेते हैं नेशनल फ्लैग कलर, आपको ब्लू कलर का जो, या आपका अभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था किसी से, व्हाट इज नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान क्या है, किस कौन से लैंग्वेज, ये दीज आर सम क्वेश्चन विच यू आर डेफिनेटली सपोर्ट। अबाउट योर हॉबी, हॉबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ब्लफ नहीं किया हुआ आपने, ये सब चीज़ें यू कांट से। अदरवाइज बाकी सब चीज़ों में आप अगर कुछ करंट अफेयर में पूछते हैं कोई भी बात, यू कैन वेरी वेल कॉन्फिडेंटली से सर आई नो। In some mode, sir, I was asked that what is the weight of the shuttle. So हाँ, तो आपने जैसे बैडमिंटन आपने बोला है, it is my hobby. So हाँ हॉबी में देखो वही ना, हॉबी के अंदर हॉबी इज डिफरेंट फ्रॉम योर आई प्ले फुटबॉल और फुटबॉल इज माई हॉबी, दोनों में फर्क है। When hobby is there, there is an attachment with that thing. yes, sir. You are emotionally attached with that. You are enjoying, you are loving doing that thing. Yes, sir. Then they would expect to know, भाई अगर हॉकी बोला तो हॉकी की बॉल की क्या है, हॉकी की स्टिक की हाइट क्या होती है। These are obvious questions to see whether you love the subject or not. So in such questions, can I give the estimated answer? For example, No. If you know the answer accurately, say so. then Or otherwise take permission to make guess. Sir, I am not aware, but if you permit, I can make a guess. It is like this. But don't go too wild. मान लीजिए आपकी शटल का वेट 10 ग्राम है, 11 ग्राम कह दोगे तो वन कैन टॉलरेट, बट यू से हम 150 ग्राम है, yes, sir. that will not be accepted. So you should be very clear about this. और जो हॉबी तो आपने खुद ने मेंशन की है, हॉबी के बारे में पता कीजिए, कौन को अभी रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, कौन विमेन में कौन जीता है, मेन में कौन जीता है, व्हाट इज द साइज ऑफ द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट, दीज आर ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यार आधा घंटे में पता चल जाती है क्या उसके। Yes, sir. I prepared that, sir. Okay. चलिए ऑल द बेस्ट। Thank you. तो मेरे को लगा ना कभी आर कंसर्न, बोर्ड इज कंसर्न दैट यू शुड मेक इट दिस टाइम। एक क्वेश्चन पूछना, एक ही क्वेश्चन, इंडो पाक रिलेशनशिप जो है ये करंट अफेयर्स है, जब आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स में आती है इंडो पाक रिलेशंस। Yes, sir. It can mean current affairs. श्योर, It is evergreen current affairs. इट इज एवरग्रीन करंट अफेयर। तो फिर कंटेम्प्रेरी अफेयर क्या होता है? So evergreen current affair is, I think, a contemporary affair. एवरग्रीन करंट अफेयर इज कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो करंट और कंटेम्प्रेरी अलग अलग आप बता रहे हो। एवरग्रीन जो करंट है, करंट अफेयर मीन्स यहीं से एक ड्यूरेशन है ना करंट अफेयर की, Yes, current affairs is for short time, and contemporary affairs इज एवरग्रीन। is evergreen. It is always pops up. Yes, sir. Indo-US. तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स अनएम्प्लॉयमेंट, करंट अफेयर अभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अभी ये लास्ट हो गया। Yes, sir. Okay. सो यू नो मफलर पहना हुआ मैं, जैसा मफलर राइट, वॉस अ कैवेट। चलिए वो छोड़ दीजिए, कैप लगाती है फौजी, उसको क्या बोलते हैं जो वो ऐसे करते हैं यूं हल्के, इट्स नॉट द हल्के से यूं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैप नहीं पता सर। मरून होती है ना, Sir, I don't know. पहन के देखा तो होगा, फिल्म में देखा होगा। दिस कॉल्ड बैरेट। Barrett. बैरेट। Okay, sir. So if somebody says बैरेट, you know what woodpecker, वो feather कॉक वाला बोला, woodpecker जो है वो कितनी दफा पेक करता है 1 मिनट में? How many times? Have you seen a woodpecker? Yes, sir. How many times does it peck? Can you count it? No, sir. 126 per minute. You can't see. है ना? तो कुछ क्वेश्चन होते हैं which actually sharpen your brain, है ना? कुछ होते हैं तो trick you inside, you know? और कुछ होते हैं खामा खाई में पूछे आप, तो always it's a amalgamation. Okay, sir.